Viewers, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about sampling methods, types, techniques and examples. Okay, before going to start our video, let me tell that when you conduct research about a group of people, कोई भी research आप conduct कर रहे हो, group of people, it is rarely possible to collect data from every person. No, हर किसी से डाटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है. सो इंस्टेड ऑफ दैट you are selecting a sample piece, and the select is the group of individual who will actually participate in the research. So to draw a valid conclusion from your result, you have to carefully decide how you will select the sample, so which is known as a selecting sample representative of group as a whole. So this is called a sampling method. Okay, so when you go to the shop and if you want to purchase something, or take the example of that sweet, and that time you want to check it, or take the example of if you go to the market and want to purchase grapes, and then you took up one grape and try to test it, is it sweet or not. So it is a sampling method like that. In the research methodology also, sampling method, there are two primary types of sampling method that you can use in your research. जब कोई हम research कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि पूरे भीड़ में से, पॉपुलेशन में से सबका सबसे डाटा कलेक्शन हो. तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, एक सैम्पल चूज़ करते हो 2-3, और उसमें से हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करके चूज़ किया जाता है. तो उसमें देर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड है. पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो नाउ व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन allowing you to make strong statistical inferences about the whole group. कोई प्रोबेबिलिटी मतलब एक रैंडमली आप पीस उठाते हो सैम्पल और उससे होल ग्रुप को जज कर लेते हो. देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस or other criteria. Okay, so you should clearly explain how you select your sample in methodology. Now the section of your paper or thesis as well as how you approach the research. Let's see. Now here, population versus sample. First you need to understand the difference between the population and the sample and identify the target population of your research. So the population, it is the entire group that you want to draw conclusion about. And what is sample? Sample is the specific group of that among that population that you choose, individual that you will collect data from them. It is a sample. So the population can be, I hope that sample का जो concept है वो समझ में आया होगा कि भाई sample जो है एक specific group of individual है that you will collect data from them. Now the population can be defined in the term of geographical location, उनकी age क्या है, income और many other characteristics. See that population and the sample. Now can be very broad or quite narrow. Maybe you want to make inferences about the whole adult population of your country. Maybe your research focus on customer of a certain company, patient with the specific health and condition. Or it is very important to carefully define your target population according to the purpose and the practicalities of your project. If the population is very large, मानो बहुत large population है, demographically mixed है, geographically dispersed है, मतलब फैली हुई है, it might be difficult to gain the data or the representative of sample. So lack of representative sample affect the validity of your result. और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होने की वजह से इसका असर आपके रिजल्ट पे भी हो सकता है. सो दे कैन लीड टू सेवरल रिसर्च बायसेस एंड पर्टिकुलरली सैम्पलिंग बायस. नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? नाउ फ्रेंड्स, द सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. क्या है सैम्पलिंग फ्रेम? तो सैम्पलिंग फ्रेम एक एक्चुअल लिस्ट है इंडिविजुअल्स की दैट द सैम्पल विल बी ड्रॉन फ्रॉम. Ideally, it should conclude the entire target population and nobody who is not part of that population. Okay. So, take the example of sampling frame. You are doing a research. मानो कि आप research कर रहे हो on working condition at a social media marketing. On working condition at a social media marketing company
and your population is about near about 1000 and employee of the company. Your sampling frame is the company's HR database which lists the name and contact detail of your employee. Okay, now the sample size, what should be the sample size? Okay, so the number of individual you should include in your sample depend on the various factors. जो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है सैम्पल का साइज़ है वो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग द साइज ऑफ वेरिएबिलिटी of the population and your research design. There are different sample size calculators and formulas depending on that you want to achieve the statistical analysis. Okay, now अब आते हैं probability sampling पे. probability sampling methods. तो probability sampling methods की जब हम बात करते हैं, that every member of the population has a chance to being selected. What is the probability sampling means? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ये कहता है कि पॉपुलेशन का जो ईच एंड एवरी मेंबर है शुड गेट अ चांस बीइंग सिलेक्टेड. इट इज़ मेनली यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. ये ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है. अगर आपने मेरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए एंड वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी. इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, probability sampling techniques are the most valid choice. So there are 4 main types of probability sampling. What are they? They are simple random sample, systematic sample, stratified sample and cluster sample. तो सबसे पहले हम बात करेंगे simple random sampling की. In a simple random sample क्या होता है? Every member of the population has a equal chance. Every member of the population जो भी है has a equal chance of being selected for sampling frame and should include the whole population. So to conduct this type of a sampling you can use tool like a random number generators. Okay, so it is known as a simple random sampling. जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. You want to select a simple random sample of 1000 employees of social media marketing company and you assign a number to every employee in the company database from 1 to 1000 and then use a random number generator to select the 100 numbers. This is how you can achieve it. Now what is a systematic sampling? Systematic sampling होता है similar to simple random sampling but it is usually slightly easier to conduct. But ये थोड़ा easy है conduct करने में. Every member of the population is listed with a number but instead of randomly generating number इंडिविजुअल आर चोजन टू रेगुलर इंटरवल्स. ओके, जैसे कि जो ऑल एम्प्लॉयज़ है कंपनी के लिस्टेड है उन्हें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना. फॉर द फर्स्ट 10 नंबर यू कैन रैंडमली सेलेक्ट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. then if you use this technique it is important to make sure that there is no hidden pattern. Okay, so उसके बाद आता है stratified sampling. Stratified sampling involves the dividing the population into the subpopulations that may differ in the important way. तो stratified sampling involve होता है dividing the population को divide करो into the subpopulation, जैसे कि it allow you draw a more precise conclusion. Okay, so to use this sampling method you divide the population into subgroups like based on the relevant characteristics. जेंडर से अलग करो, आइडेंटिटी से, एज से, रेंज से, इनकम से, ब्रैकेट से, जॉब रोल से, और इस तरह से आप पॉपुलेशन को फ्रैगमेंट करके डिवाइड करके रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं. सो ये बेस होता है ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे. एक आध कंपनी में मान लो 800 फीमेल एम्प्लॉयज़ है एंड 200 मेल एम्प्लॉयज़ है. सो यू वांट टू इंश्योर दैट सैम्पल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी. So you sort the population into 2 strata based on gender. Then you use the random sampling and each group selecting 80 women and 20 men, which gives you the representative of the sample of 100 people. Okay. उसके बाद आता है cluster sampling. Cluster sampling जो है also involves the dividing the population into subgroups. Cluster sampling में भी जो हमने stratified sampling देखा
उसकी तरह क्या होता है, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन होता है, सब ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड करना होता है, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट हर एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए टू द होल सैम्पल. सो जैसे इफ द प्रैक्टिकली पॉसिबल यू माइट इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सैम्पल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. The method is good for the dealing with large and dispersed population, but there is a more risk error in the sample. Okay, जैसे कि द कंपनी हैज़ ऑफिसेस इन 10 सिटीज़. मान लो एग्जांपल देखते क्लस्टर सैम्पलिंग का, कि कंपनी के 10 सिटीज़ में ऑफिसेस है अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल द रफली द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द सिमिलर रोल. सो यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ट्रैवल टू एवरी ऑफिस. आप हर 10 कंपनी के 10 ऑफिसेस में नहीं जा सकते डाटा गैदर करने के लिए. तो आपने क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ किया और 3 ऑफिसेस को सेलेक्ट किया और उनसे ही आपने सैम्पलिंग करके आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पे अप्लाई किया. सो हियर आर द मेथोडोलॉजी, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड एंड डाटा क्लेंजिंग एंड द रिसर्च बायस, वो क्या होता है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.